Sir, computer science is everywhere around us. There's no escaping computer science. Even Why did if you not I'm, choose to graduate in computer science? because I'm more interested. Because all I see is a mandatory project. This is a mandatory project, I'm very sure. Yeah, that is my final year thesis. Yes, sir. Design and analysis of next Yes. generation transistor, right? Yes, sir. So what else have you done apart from the mandatory project? So you can So- say that is why you use multiple frequencies Yes, sir. For to be bet- able to emit at further distances as well. Yes, so that's why you picked lower frequency bands yes, as well. that is generally used for a stable communication line. What do you Hello, good morning. sir. Good morning, sir. Have a seat. Thank you, sir. How are you doing? I'm doing so good, sir. How's your day been? So Neil, we are very tired. We have taken multiple interviews, Okay. and you have mentioned you have good communication skills. Yes, So I sir. give you 30 seconds only to tell us about yourself. Hello, sir. I'm Neil. I'm in EC undergrad. I have done my BTech from VAD Chennai, and today I'm here in front of you for my MBA interview. I just want to say that I'm very proud of what my work has been in my undergraduate, especially my thesis. And apart from my academics, I have a set of activities that I'm interested in, especially playing chess, online gaming, and I also like to read a bunch of stuff like light novels. So, yeah, that's it, sir. I guess you have very less corporate exposure so far, right? There is a serious lack of corporate exposure. And what we see, in the other candidates, they already have some kind of business knowledge or some financial acumen. Are you even ready for MBA now? Or should you have scored a stellar percentile? I guess even if you go ahead for some work experience, try CAT again, you can easily crack it, right? Maybe not at this 99.93, it can be somewhere around 19.7, still you will get the course. Is it the right time for you to jump into MBA? Sir, I do think that this is a good opportunity for me to jump in right now into MBA. Like you said, I don't have any sort of corporate exposure. That is completely true. But sir, to make up for it and to show that I do have basic knowledge in some fields, I have done a couple of projects. I think you can see it in my resume as well. I have utilized AI tools and other technological tools to analyze sales data. I have also done customer segmentation for a store, and I have also done sentiment analysis of a marketing campaign done by a company. All of these data sets that I have used were open source data sets. So Neil, you said you're an electronics and communications graduate. Yes, sir. But all of your projects you're also describing they seem more inclined towards computer science. Any reason? Sir, the thing is, I have more projects than this. I have my core electronics and communications projects as well. I've also included my thesis in my resume. It is based on VLSI domain, and apart from that, I have another project in a communications field. I have designed. Let me say this again. Yes. You're an EC graduate. Yes. Why an inclination towards computer science? Sir, computer science is everywhere around us. There's no escaping computer science. Even Why did if you not I'm, choose to graduate in computer science? because I'm more interested. Because all I see is a mandatory project. This is a mandatory project, I'm very sure. Yeah, that is my final year thesis. Yes, sir. Design and analysis of next Yes. generation transistor, right? Yes, sir. So what else have you done apart from the mandatory project? And the Sir, I have designed an antenna as well, multi-band antenna. So if what bands were covered in that, and what purpose was that for? so Wi-Fi band, 5G band, and apart from that, there was also You said multiple bands. yes. So 3 different bands that Which were were what were the frequencies of those bands? 2.4 gigahertz, 5 gigahertz, and another one was at 6.5 gigahertz, around that range. Okay. So, How do they differ? sir, the use cases and the spectrums are different in each I'm of a the layman. case. I'm a layman. Okay. So the difference is that in your phone, when you're receiving a certain signal, each of that signal travels at a different frequency. So if your antenna can detect multiple bands of frequencies, you can basically get more data in your phone through a single piece of equipment. You will not require a diverse set of different equipments, or let's say different decoders or any sort of extra equipment if the antenna itself is doing that work So for you. is 6.5 gigahertz more advanced?
Sir, it's just a different frequency bands. It's actually still an exploration. It's not really commercially used yet. It is they're thinking for future applications, maybe for defense applications as well. So it might be used in some How does distance impact the applicability of a particular band? Compare between these three that you mentioned. Sir, the higher the frequency, the lesser the power that it can emit at a longer range because of noise and everything that is affecting the signal at that distance. So you can say that is why you use multiple frequencies. Yes, sir. For to be able to emit at further distances as well. Yes, so that's why you pick lower frequency bands yes, as well. that is generally used for a stable communication line. Yes. What do you understand by coherent frequencies? Coherent frequencies, sir. Have you ever experienced that when you are talking to someone, you will just suddenly hear that their voice is breaking out, or something along those lines. So coherent frequencies are when your connection is stabilized, you are hearing what I'm saying clearly. And when you're not able to hear that, there can be multiple reasons for that. One, most particularly noise. Noise is basically all the other signals and frequencies which are not supposed to be in the signal that you're hearing. How does a noise cancellation headphone eliminate these noise signals? I'm actually not sure about that, sir, but if I had to guess, I think it would be by having very particular set of frequencies that it receives from the sender side. So let's say if you have connected noise cancellation headphones with your phone, I think it might have two different modes. In one when which it is not doing that noise cancellation, and one with the noise cancellation, right? So when you are activating that noise cancellation mode, what it does is it fills the bandwidth with empty noises, which essentially eliminates the higher frequencies which interfere with this actual connection and the signals that are present in that connection. See, what I see is Yes. you are from EC background. Yes. Then you thought to just develop some skill sets related to the computer sciences because you believe that this is definitely required in today's scale. Similarly, before going to an MBA school, you should have gone for some managerial skills. Maybe taken a job for a year or two and then jump to an MBA. Sir, I could have definitely done that, but the thing was, I the reason why that I'm doing MBA actually is itself because I have been interested in semiconductor industry since a long time. I've seen that the manufacturing hub of semiconductors is in Taiwan. The designing is mainly being done in America and Europe. For Indian local domestic manufacturing, there is very less opportunities, very less companies that are actually doing it, which has changed recently because of production linked incentives and design linked incentives. So I think this time period is a very good opportunity for me to jump in and for me to be having a more meaningful impact in that ecosystem. I can definitely go in as an engineer as well, but I just think that with my skill set, I have good communication skills. I have led all the group projects that have been done, and I have successfully executed them. And so I think that if I'm going in the field, if I'm leading a team of people, I'll be having a more impactful performance and impactful change in the ecosystem. Do you think an MBA tells you how to lead teams? No, sir. MBA will provide me. See, I'm an engineer, but so I definitely have the technical skill set and knowledge. But I don't have fundamental basic understanding of businesses like structures. If you do an MBA right now without obtaining any hands-on exposure with your engineering degree, to me, in 2 years' time, your engineering degree will almost be a waste. Almost. See, that is the only problem we are looking in your resume and your answers, right? You have been a top chap, right? Good percents, even a good percentile in CAT. So I do not doubt your decision-making skills or analytical skills. What I just doubt is that, okay, you have that knowledge, right? You have that vision, what you wish to do in the long term. The things are aligning. But where I feel you should have worked a little bit is
your basic business frameworks, how do a business work? Because otherwise you cannot bring your knowledge and make a product which you can bring into scale, right? You'll come here, you will see and you'll get all the theoretical knowledge, but you haven't seen it very closely so far, right? How the things actually work. And once we see a real world, it is slightly different than the bookish world which you're gonna see over here, right? So what do you think is the right call? I'll give you again another chance to go and do the MBA right now, or maybe take an year experience in a good company, maybe a semiconductor firm. You are saying there, so many firms are upcoming in India as well, Yes. right? So what should be the right strategy? Sir, I still think that I would be preferring to do. I have something to add Yes, sir. to Sir's question. You can respond to that right after this. Okay. You say that you're interested in semiconductor industry for a long time, and MBA is going to pivot or at least help you make an impact in the industry. So once you do an MBA, will you be only focused on getting employed in organizations that work in semiconductor industry or not? Now answer Sir's question along with this. First, can I answer his question? Yes. Okay. So, sir, I still think that I'm doing MBA first is going to be my better preference because, frankly speaking, sir, I do think I understand your viewpoint, sir, but I do believe that if I have a theoretical background for management philosophies, I can still build upon it better than I would be doing while working as an employee. See, I already see you. You're looking for theoretical. I already see you have practical exposure to management. You are saying that you are part of the organizing committee for the college fest, and I believe fest for VIT is not on a small scale. Yes, sir. It was the events that I have participated and organized for the club. Those events were on the scale of about 200, 300 people each. And for the volunteering experience that I mentioned during Lohari, that was about 1,000 to 2,000 people. And for the fest itself, it was more than 10,000 people. Why do you need a theoretical experience? But I still feel what sir is saying is right. So structure and MBA is So you are just organizing the fest without any structure. obviously there is structure, Your sir, course but that you did for 4 years, that was. but that is, sir, structure. very different from academic experiences. You definitely understand that those experiences are going to be very different from what I would be facing perhaps in a corporate environment. I think if I am doing saying, why don't you go for an engineering job in a corporate environment? You will learn structure there as well. So, And also be able to leverage and hone your skills hands on. That looks to me a perfect plan. Already have the technical knowledge, a little business exposure, and then take the business acumen from the experts. You are a complete package. And you've already, looked forward to a particular product, I would say, or a genre which is going to be upcoming or which is going to be, blasting in the next 4 or 5 years. And you can be the first to take it up. And I'll tell you, companies are running to have people like that who have hands-on experience plus an MBA. Absolutely. And you're still too young, right? No experience is directly jumping to MBA. sir, I do understand your perspective, and I did think about doing a job for taking before doing CAT and. Why you did not? Sir, because I thought this was an opportunity that would help me be better than that. That this path is what I had chosen. I had set my mind to do an You MBA did in not my. sit for placements in the campus? I did sit for placement, sir, but then Was because that a backup then? Was that a backup then? I was still making up my mind at that point of time, sir. But Did you convert any company? You don't need to name, but did you? yes, I had. You accepted an offer? No. Then why were you sitting? Sir, my main motivation for sitting in placement was that I wanted to validate my own technical skills as well. So are you doing that same thing with us? No, no, sir. So I'll just give you a simple question, right? We have a candidate, 𝐀𝐻𝐨𝐿, Yes, sir. 99.93 percentile, Yes, sir. no work ex, the way he is now. Yes. I have another candidate, 𝐁𝐻𝐴, 99.6 percentile, let us say. Okay. With a 1 year experience in the new upcoming, firms that are dealing with, the semiconductor chips or something like maybe Intel, maybe Samsung, right? Who should I prefer?
Sir, if everything else is the same, absolutely same, Just then he has 0.3 percentile less, but more He has the hands-on exposure. CAT score is less. if he has the same analytical skills as me, if he has the same You are the fundamental same guy. understanding, You are the same guy. yeah, I would definitely tell you to choose that guy. So Yes. I should have chosen that guy. So Yes, you sir. also will have, if you are given the two options, you will choose that guy. Yes, sir. So why you don't want to be Why that did guy? you choose to be this guy then? You said you thought about You can easily do that as well. You Yes, can I can. easily become that guy as well. Yes, Right? sir. The only thing required is a work, and you've already got the job. Right? You already converted the campus placement. Why did you not choose to be that guy? And it hardly matters, right? You're not at that stage where the financial things are very important, right? You are still very young. You don't have so many gap years or something like that. Why? So because I had set my mind to doing this. Why? You are yourself choosing between A and B, B, Yes. and then you're saying, exactly. And so you said that you really thought about it well. In 2 minutes, sir convinced you to choose B. No, And I'm you just did saying your that if everything is similar, then definitely you You are should. the same If guy, he, everything if there is is similar. only two seats available, one seat available, You and had two choice to guys, become yes. B. Then why did you become A when you yourself choose B? that is my point. You have the capability to become a B. Sir, I think there's a misunderstanding. First thing, the company that I'd converted, it was not from electronics background. It was more of a CS background, Why did IT you not background. apply to companies like Qualcomm? And I did apply. My CGPA was a little too less for them. so what happens when you join for an MBA program and you again fall short of, because very Hmm. limited companies in the semiconductors visit the campuses every year, Yes, sir. and there are multiple people like you, and there is B also, Neil B. Yes, sir. He'll be chosen over you. And then again, your dream just gets shattered over there. You have to switch again. No, no, sir. I'm not gonna switch again. So I'm doing MBA fundamentally because I want to learn, I want to lead a business, and I want to grow myself as a person. You You have are a family definitely business? You have a no, family business? Then whose nothing. business will you lead? Wherever I'm working, Will you lead eventually. from day one? No, sir. I'll be starting from some other position, obviously, but I'll climb the Don't you ladders. think having intricate hands-on knowledge from your engineering background for a couple of years would have helped you lead better by knowing how those people work? Sir, there's this thing that one of my friends had said that Neil, yes. straightforward answers. Can you repeat the question again, sir? Don't you think Mhm. having hands-on exposure, working with those engineers first for a couple of years and then going for an MBA would have helped you better understand how day-to-day works and then be able to take those managerial and leadership decisions better? Sir, that would have helped me for that particular industry as well. But if I'm going to be working in a managerial position, I think that apart from having just a deeper technical understanding of the business, there's other fundamental things that I have to keep in mind. Let's say financial perspective, operations perspective, logistical perspective. Let's say if we're setting up a factory, what type of place would be suitable, what are the incentives that I can get, and overall the decision making power, I think I would have it better if as a manager than as a technical guy, engineer. Or you mentioned about the India lagging behind the semiconductor ecosystem, Yes, sir. right? Can you give me some reasons why India is lagging behind in the semiconductor ecosystem? Sir, I think the first reason that I can think of is a lack of research funding that has been going into that specific industry and overall as well, generally. So we did not have production incentives. Industries are always been lagging behind as a overall share of GDP in India as well. So both these aspects somehow are critical to these manufacturing hubs. And if we are going to manufacture semiconductors for different products, these factories require enormous amount of investments, manpower, One is the talent. investment, then Yes. manpower.
Yes, and Is it talent. about the manpower? India is No, very India has a competitive. lot of talent and manpower. That is not the main reason behind that. But it is also lack of investment and a One lack reason of. you have given me that is fine. That is lack Yes, of R&D funds or lack of investment. I'll buy that. yes, sir. Another reasons? I think, sir, we at some point of time we just did not see semiconductors as that critical of an industry as we see it right now. Especially after COVID. And COVID, you might have known about the chip crisis that shortages that had happened because of the disruption of supply chains. And apart from that, semiconductors are very critical But in. do we have the raw materials required to manufacture No. these Do things we at have the scale? raw material? Do we have the supply chain logistics for that? Sir, the raw material is basically, if you are going for semiconductors, and most of the semiconductors, major raw material that is required is silicon. Silicon is abundant everywhere, so that is not really an issue. The issue is actually processing it in a meaningful manner, refining it, and getting to it to a quality that is required for the manufacturing. For that, you need industries, dedicated industries. You need dedicated water supply, electric supply. All of these things, I suppose, were lacking in some aspect or another. But if you look at it right now, this Dolera city, which has been emerging as a hub for semiconductors, Tata Electronics is investing there, I think, and I think government of India also announced that four semiconductor plants are going to be operating commercially, like they'll start selling commercially in India in this year. So things are changing. The ecosystem is growing. It is diversifying. We are domestically developing Vikram 32 chip, Dhruv 64 chips. These are very critical parts of defense industry as well as commercial applications. Can you tell me the difference between semiconductor fabless model and foundry model? Foundry model is basically that manufacturing it from this. Fabless is, I think, more focused on designing of the manufacture, the IP value uh, of the sector. Sorry, again, the fabless A, section again. fabless sections are, it is more focused on the designing aspect of the semiconductor itself. So if you are designing a transistor, it's one thing to be able to manufacturing, and another thing to be simulating it over computer aided design softwares. Where is India more lacking? I think both, sir. Both. Yes. So that means the manufacturing part is also not sorted and the designing part is also not sorted. Yes, sir. And that is why we have both incentives as well, PLI as well and DLI as well. What are the top firms in India and abroad dealing with this? India, I am not really sure about that. Abroad, manufacturing is dominated by TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, and for the designing part, Why it is so critical for the global economy? because everything that we use, electronics, automobiles, and now other data centers and everything requires semiconductor chips, processes to function, and it is always going to just expand. We are Can not we say it is a paradigm shift now uh, towards this paradigm shift in exactly what case, sir? in the terms of technology and all these electronics? Earlier we used to have, when we used to have those mobile phones and everything, computers, and then suddenly we have the flat models. Is it because of the semiconductor chips or is there some more advancements into it? I think it's a combination of both, sir. Like technology itself is advancing, AI is fairly new, it is still expanding. And apart from that, semiconductor technology has progressed insanely well in the last decade. We have gone from channel lengths of, let's say, 100 nanometers, 80 nanometers to now, and we are discussing to shorten it into sub 5 nanometer channels. Shorter the transistor, more efficient the processor is. Do you think the government of India realize the power of semiconductors? And are they doing something to you? We all know that we are lacking behind in this Yes. particular domain. Are we doing something towards it? Yes, sir. I think government definitely realizes this, especially in the recent years. Did India never invest in semiconductor manufacturing? I think there was a time when we were leading in the semiconductor manufacturing. I don't remember the exact years. What happened? I think the major foundry that was being operated, there's some accident happened. I don't remember the incident perfectly, but after that incident happened, we basically just dipped off from semiconductor sector altogether, and we relied on importing it
completely for critical sectors. Do you think it could be a politically motivated? I have no knowledge of that, sir, honestly. Alright, I guess a lot about semiconductors now. Some fun angle about 𝐀𝐻𝐨𝐿. We have seen a guy who has been working hard, getting all the grades, right? Yes, sir. And then engineering and all those thesis products. What do you do in your leisure time? Sir, in leisure time, like I said, I love reading light novels. Light novels are basically fictional books which come chapter by chapter online at some particular website. Apart from that, They're not hard books. you can get a hard book, but usually it is in the form of soft copy. Yeah, yes. And apart from that, I love gaming. I like to play different games. I like playing chess, Okay. and I like Online. Yeah, online. I play over the board as well, but mostly online because there's a lot of players online. So. Have you participated for any game? Yes, sir. In my college's inter-college team, I was part of it in third year for chess. What? For chess, like in chess particularly. So do you play these days as well, or you left it? I play these days as well. What is your ELO rating? What? What is your ELO rating in the chess? ELO rating, sir. I haven't officially registered to FIDE, so I don't have a ELO, but online rating in different. Chess.com or something? You're playing on the chess.com? Yeah, I do play on chess.com. What's the rating over there? Sir, in rapid and blitz form is around 1400, 1500. In classical, it is a little more. What does that corresponds to percentile? I think it is just slightly above average. Slightly above? Average. Alright. 1400 plus rating on the chess.com, and you are saying slightly above. So he's in a particular category. It's rapid. Rapid and blitz, yes. Right. So it's basically shorter time format for a game. That's a good one. Hey, that is fine, but 1400 rating is very good, but the percentile is not matching. You're just saying it as an above average. I actually haven't really looked into the statistics themselves. So, like in the group that I play, it is slightly above average. So I reference that to answer that question. Alright, so it is in the reference with the group you have played, right? Yes, sir. Okay, I think I'm done. Any other hobbies, Neil? Gaming. You said chess. Valorant, Catan. So you play Catan. Yes. Okay. Apart from that, pool. Board games basically. So Yeah, board not games. a fan of sports. Not really, not any physical sport. I do play sports occasionally, but I won't call it a hobby. How could I have answered that work experience question better? No. This is not a feedback line. Okay, sorry. We are still panelists. Okay, sorry. Nothing further. यही एक पॉइंट है आई गेस द लाइफ इज क्वाइट सॉर्टेड एंड द टॉपिक इतना ही हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे है ना जितना थोड़ा सा ही है बस वहाँ पे वो है वहाँ पे आपको उसको ब्रिंग इन करना है जो आपने अपने जो इवेंट्स मैनेज करे हैं ना आप ये बोल सकते हो कि सर मैं एक साल के लिए जाऊंगा भी तो इट इज हाईली अनलाइकली दैट आई गेट अ वेरी हाई मैनेजरियल रोल्स अभी मैं जाऊंगा तो ऐसा तो है नहीं कि जाते ही मेरे को कोई सीईओ बना देंगे या मार्केटिंग हेड बना देंगे या स्ट्रेटजी लीड बना देंगे तो वहाँ भी मेरे को बेसिक ही सीखने को मिलेगा एंड आई नो दैट दैट विल डेफिनेटली ऐड वैल्यू ऐसा भी नहीं कि उसको एकदम ही डाउन प्ले कर देना बेकार है एक साल कुछ फायदा नहीं होगा बोलो यस सर आई नो दैट आई लर्न right, and I'll get better, I'll get to know how the industry works, but मैंने थोड़ा सा ये एरिया देख लिया है when I was doing all these managing my मेरे ख्याल से कहाँ पे BIT के आपने इवेंट फेस कराए which I got the opportunity to lead a team of maybe 100 or 30 whatever you mentioned. वो that was a participant team तो इतना बड़ा नहीं था. पार्टी कितना था? क्या? कोई टीम लीड किया था उसमें कुछ एक इवेंट में किया था मैंने सो इट वाज अ टीम ऑफ अराउंड 10 पीपल. एक्सपीरियंस हटाओ बहुत होता है हाँ मतलब आफ्टर 4-5 साल के बाद आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको शायद 10-12 लोग की टीम आपको हैंडल करने को मिलती है ना तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर लिया एंड आई लाइक्ड द मैनेजिंग पार्ट एज वेल आई लाइक दोज रोल्स कि हम कोलैबोरेटिवली स्ट्रेटजीज बना रहे हैं एंड माय कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली हेल्प्ड मी टू bring out a good output from the team of 4-5 people whatever we had so we could work on various strategies that eventually worked out well for that particular event so I already have taken a little exposure of those skill sets and I like myself to take those kind of roles so I know that I love doing it तो बस मुझे ये clarity चाहिए कि ये बंदे को
ऐसा ना, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, IITians जो MBA करने जाते हैं, वो जाके फील करते हैं कि यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, माय कप ऑफ टी वाज इंजीनियरिंग और मे बी डिजाइनिंग प्रोजेक्ट, राइट। अभी मैं इस पे जा सकता था कि भाई अगर मैं जब मैंने वो फैबलेस और फाउंड्री वाला ऑप्शन ओपन किया था, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग वाला, माय फॉलो अप क्वेश्चन कुड हैव बीन कि भाई आप किस में जाना चाहोगे, वेदर इट शुड बी इन डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग, राइट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो तो फिर वो सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स सब कुछ आता है, दैट इज मोर टुवर्ड द मैनेजरियल साइड। डिजाइनिंग में जाते हो तो फिर मुझे लगा कि यार इसको टेक्निकल साइड ये भी ज्यादा पसंद है। अच्छा, नहीं मैं उसका एक्चुअली रीज़न, मैं टेक्निकल DLI का ही आपने अगर पूछा होता ना, आई वुड हैव चूजन डिज़ाइनिंग पार्ट, नॉट बिकॉज ऑफ दैट एस्पेक्ट, बट आई वुड हैव सेड कि लाइक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इट रिक्वायर्स enormously more investment, like thousands of crores. इसमें like you can still get like 50 crores 100 crores के इन्वेस्टमेंट में you can set up a good firm and start it वैसे करके। नहीं खोल रहे ना, हाँ like मतलब ओके, हाँ ओके, फंडिंग हमें थोड़ी रिक्वायरमेंट है, मे बी later on the government backed projects also come into picture, जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि डिफेंस में बहुत ज्यादा इसका रोल आने वाला है, आने वाला डिफेंस तो सारा का सारा इसी पे होने वाला है, राइट। वेदर यू टॉक अबाउट द रेडार्स और ऑल दिस S-400 S-500 सब इधर ही जाएगा, तो फिर वो चीजें वहां पे और जाती तो मजा आता, बट डिफेंस वाला एंगल मैंने खोला ही नहीं। The reason I also instigated is that a general advice, never give share political viewpoints. अगर मैं लेफ्ट हूँ तू राइट है, and vice versa. इसलिए मैंने वो डाला था कि तेरे को नहीं लगता है गवर्नमेंट साइड पे, बट यू टुक अ वाइड अच्छा एस्केप लिया तूने यहाँ से कि मेरे को लगता है कि वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, बट रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। एक और पॉइंट तूने वहां मिस किया था जब मैंने बोला था कि हम सेमीकंडक्टर मार्केट में क्यों पीछे हैं। यू मेंशन्ड अबाउट द इन्वेस्टमेंट। देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी एंट्री इसमें लेट हुई है। नहीं सर ने जैसे बोला था ना, वैसे एंट्री तो लाइक एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेशन वाज लाइक एक्चुअली रियली नाइस बिफोर 1990s, बहुत आगे थे हम लोग पहले। फिर मैंने गूगल किया और वो चीज सही थी, सेमीकंडक्टर का ही था। हाँ, तो समथिंग हैपेंड, बिकॉज़ देयर वाज अ पॉलिटिकल थिंग एज वेल। हाँ, मैंने इसलिए थोड़ा टच अप ऑन नहीं किया, मेरे को आइडिया है एक्चुअली उस चीज का, बट लेकिन फिर फाइनल एंट्री तो लेट हुई ना, वहाँ तो गैप ही आ गया ना, हाँ, उधर गैप आ गया, हम छोड़ ही दिया उसको, फिर साइड रख दिया हमने, क्योंकि अपने इंडिया में एक्चुअली में हो जाता है ना, हो जाता, ये सब तो चलो टैलेंट तो बहुत है इधर भाई। हाँ, तो वो किसी ने उस टाइम उस चीज को बढ़ावा ही नहीं दिया, फिर वो रह गई वहीं पे। बट सर मेरे को लगा कि लाइक उस साइड पे अगर टच अपॉन करने जाऊँ थोड़ा पॉलिटिकल भी हो जाएगा फिर वो चीज, इसलिए मतलब that area you handled well. सिर्फ But वो you वाला should area still talk about that incident if you're aware. Fire, some incident happened. some क्या होता है? You should tell. मतलब फिर ये है कि कोई पता भी है इसको और फिर इसने स्टडी भी नहीं किया, या तो पता नहीं होता कि कोई इंसिडेंट हुआ था इस वजह से हम लेट हो गए, तेरे को पता भी है कोई इंसिडेंट हुआ था उस वजह से हम लेट हो गए, तो तेरे को उस एरिया को टच कर देना चाहिए। हालांकि लास्ट में तो बोल सकता है कि सर बट आई अंडरस्टैंड दैट द इशू कुड हैव बीन मच बियॉन्ड माय थॉट प्रोसेस बिकॉज़ आई वाज वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट एज पर मी दिस वाज द रीजन। तो फिर भी ऐसा होता है कि तू एक साइड पे रहता है, मैं तो पैदा ही नहीं होता वो इंसिडेंट। Things like the economic liberalization spurred the IT boom, where manufacturing sector took a back seat because of the investments involved. ऐसे भी politically, so one point that I noticed is intro थोड़ा improve कर यार। हाँ, वो इंट्रोडक्शन में मेरे को कल भी बहुत दिक्कत आ रही थी। 4 projects and I could not capture anything. Maybe 30 seconds थे, तो just touch base कर किस field में किया है। Let us ask कि tell us about one project of yours. ओके, वो फिर वो उस चीज के साथ बिल्कुल नहीं जाता जो स्ट्रेंथ में लिखा हुआ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ ओके, ये सर 4 प्रोजेक्ट भी मैंने लाइक MBA पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बनाए थे ना वो इंक्लूड किए थे वापस से। प्रॉब्लम नहीं है, लाइक सर गिव यू 30 seconds, आई थिंक वो 30 seconds के चक्कर में यू जस्ट हाँ बहुत फ्लस्टर हो गया, पहला स्टार्ट भी सही नहीं बना ना, नहीं बना, उसी में थोड़ा दिक्कत आ गया। और दूसरा ये भी है कि मतलब तेरी लाइफ, मुझे जो लगता है जो तू आगे देख रहा है तेरी लाइफ पीछे चलती है, दैट हैज ऑल बीन अराउंड दिस सेमीकंडक्टर वाला। इतना ज्यादा भी नहीं है, बट लाइक हाँ वही वन थिंग लाइक 12th वापस में, मतलब जब स्टार्ट हुआ था ना तभी से थोड़ा इंटरेस्ट था। नील, वन थिंग सीवी में कभी भी आपकी होम टाउन वगैरह जनरली नहीं लिखी होती, तूने नहीं लिखा हुआ, एटलीस्ट कुछ लोग स्कूल के साथ लिख देते हैं, मेंशन दैट बिकम्स अ टॉकिंग पॉइंट। ओके, बट अब मान ले जैसे फॉर एग्जांपल तो इंदौर से है, यू शुड बी अवेयर अबाउट इंदौर में की स्पेशलिटीज क्या हैं, वहां से कोई रिवर जाती है नहीं जाती है, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, तो पता होना चाहिए, एंड देयर गुड टॉकिंग पॉइंट्स एज वेल। इंदौर तो खाने के लिए वैसे ही स्लैंग बहुत फेमस है, लाइक अ पर्सन इंदौर दो मिल जाते हैं अगर इंदौर से लेके। हां नहीं अहमदाबाद से मैं तो मतलब अहमदाबादी बहुत यार बहुत टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट हेरिटेज सिटी। तो जस्ट टच बेस, इंट्रो में ही नहीं बोला वो चीज, आई कम फ्रॉम इंदौर, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली और व्हाटएवर, एंड देन यू टेल अबाउट योर स्कूलिंग। यू हैव आई एम अहमदाबाद पे हुआ?
हाँ है, हाँ, तो वो भी तो वो तो पूछेंगे। हाँ है ना। फिर तेरे से ही पूछेंगे अहमदाबाद और बैंगलोर से आया तो कहाँ पे चूज करोगे। हाँ, वो सभी पूछते हैं अभी। हाँ पूछने तो क्यों नहीं पूछते मेरे से भाई? पूछो। अच्छा ये तो मतलब वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन कि भाई तो वहां से भी कॉल है बोल लेंगे तो, या बोल देंगे सीधा तेरे को तो यार वो भी ले लेंगे, तो वहीं चलेगा, थोड़ा घर से बाहर निकल, कब तक अहमदाबाद में ही रहेगा, ऐसा भी कर लेंगे। फिर तुझे ये फिर गोइंग फॉर ए इंटरव्यू, देन ए की जो स्पेसिफिक यूएसपीज हैं वो जान के जाए। ठीक है, तेरा तो यूएसपी हो, घर के पास रहना है, एक अलग चीज बोल सकता है कि मुझे रहना है। दूसरा और भी चीजें की यूएसपीज हैं कि मतलब ये इस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं, दैट कैन रिलेट, वो सब इंस्टीट्यूट्स के अलग से प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज़ डेफिनेटली एट दिस परसेंटाइल यू विल बी गेटिंग कॉल्स फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट्स। How you can do that is open up their वेबसाइट में जाके अबाउट अस वाले सेक्शन में पढ़, उनके फैकल्टी मेंबर्स के बारे में पढ़, उनकी रिसर्च पढ़, और अगर कोई ऐसा बंदा निकल आता है, कोई फैकल्टी मेंबर वहां पे ऐसा निकल आता है जिसने कोई रिसर्च या थीसिस या फिर हैव some experience related to what are the things or domains you are looking for, then it becomes very beautiful impact ये डालता है। अलुमनाई का बात कर सकते हैं क्या सर? अलुमनाई का भी कर सकते हो अगर तुम उनसे टच में है तो, ऐसा नहीं कि वो अलुमनाई तो वहाँ जा रहा है तो ऐसे मिलने वाले हैं नहीं वहाँ पे, है ना। अगर तुमसे टच में तो रीच आउट कर ले, अभी लिंक्डइन पे तो बोल भी सकता है यार रीच आउट टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। मतलब मेरे एक जान पहचान में है, लाइक अभी जो पढ़ रहा है बट उनका तो आई डोंट थिंक बात करना अप्रोप्रिएट रहेगा आई गेस। वो अभी भी वहीं पे ही है, लाइक शी इज स्टडिंग राइट नाउ। शी इज स्टडिंग देयर राइट नाउ, मतलब अगर हाँ उनका तो नहीं 2 साल पुराना बोल दे एंड जस्ट से कि दे गाइडेड यू वगैरह वगैरह। उन्होंने मेरे को बताया कि हाउ द विजन दैट आई हैव कैन बी एक्चुअली गेट अ बूस्ट एक्सपेंशन और बूस्ट ओवर हियर। ओके। यही सीवी शेयर किया है किसमें, यही सीवी शेयर किया है? नहीं अभी तक तो वो उसमें फॉर्म ही नहीं भरा उसका। अगर सीवी भरवा रहे हैं मतलब या सीवी मांग रहे हैं, प्लीज इंप्रूव दिस पैराग्राफ्स, नो वन लाइक्स टू रीड देम। ओके। तो बुलेट्स में चले जाओ। देयर इज कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट में, होनी चाहिए थी। ओके। टीम तूने लीड करी है, यहाँ पे 10 मेंबर टीम नहीं है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 50 लोग होते हैं यार। ये तो कल ही सबसे बेसिक चीज उसमें ये थी, तुम खुद ही तो ये वाले चूज कर रहे थे ना। हाँ सर वो क्वांटिफिकेशन सर इसमें दिक्कत क्या आती है कि एक तो ये सर बहुत ज़्यादा टेक्निकल, मेरे को पहले से प्रोजेक्ट्स लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में इसमें यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को कल भी डिस्कस किया था, बट फिर विक्रांत सर ने बोला कि लाइक इफ़ यू आर फ्रेशर टेक्निकल टर्म्स इफ यू आर यूजिंग दैट इज़ फाइन वैसे करके। और फिर ये जो मेरा थीसिस वाला प्रोजेक्ट है उस पर क्वांटिफिकेशन हो ही नहीं सकता बिकॉज दैट इज़ लाइक अ फंडामेंटली पूरा नया ही। हाँ कस्टमर सेगमेंटेशन क्लस्टरिंग टेक्निक्स है, डेटा सेट कितना बड़ा था, ओके। हो सकता है ना, फ्रॉड डिटेक्शन क्या परसेंटेज है तुम्हारे आउटकम की, तो वो सब होना चाहिए, डेटा सेट का साइज क्या था, एंड अगर तुमने राइट लाइक सैंपल तुमने भी लिया होगा ना। हाँ सैंपल वगैरह लाइक वो सारे तो थे, मतलब इतना टेक्निकल हो गया, ये तेरा मैनेजरियल या लीडरशिप स्किल दिखाने के लिए था, बड़ा क्यों नहीं किया इसको। यहाँ पे 4 लाइन के पैराग्राफ्स हैं, यहाँ पे 6 वर्ड। ओके। You led a team, name it, and you will have to boost about yourself. ओके। वो लोग तो they are there to assess you, maybe even downplay you to put you under pressure. But तू तो अपने आप को बता ना क्या किया तूने। Why you downplay की छोटी सी टीम थी, 10 लोगों की टीम बहुत बड़ी होती है। वो एक अलग बात है कि you did not work to get there, ठीक है कॉलेज है तो सबका कॉलेज में ऐसे ही होता है, but you were one of 500 people or 2500 people who did that job. chosen to lead that particular thing ना। So don't downplay yourself. अच्छा। मतलब छोटे छोटे नंबर भी दिखाने से रिफ्रेन मत करो, दैट इज द पॉइंट, राइट। और ये सब चीजों में जब तू डीप डाइव ढूंढेगा ना, तेरे को लग रहा है कि वो सारी चीजें जैसे जिसमें मैं स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व नहीं कर सकता, तू कर सकता है, तेरे को ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन वाला जो तुम्हारा है, राइट, डेटा सेट एक बढ़िया नंबर होता है ना, क्वांटिफाई कर देता है वो। बाकी whenever you are calculating any percentage of correction or a percentage of something which has been failed or that has been caught, that can also be quantified. अच्छा मतलब लाइक लेट्स से कि क्रेडिट कार्ड वाला जो डेटा सेट था इट वाज लाइक 50,000 रोज लॉन्ग, तो वो ये नंबर इंक्लूड कर सकता हूँ मैं, लाइक कितना बड़ा डेटा सेट था। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है क्या परसेंटेज डिटेक्शन रेट है, डिटेक्शन रेट उसमें तो मतलब जो जितने फ्रॉड हुए थे उसके लाइक 85% डिटेक्ट कर लिए थे जो एक्यूरेट थे, वो लिखना है। वही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ओके। मतलब इस चीज को क्या रैशनल बैक कर रहा है कि तुम्हारा मॉडल अच्छा था, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। वो उसमें एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में भी मैंने लिखा था, मेरे को लगा शायद वो उसके बारे में ज्ञान कुछ नहीं चाहिए, हाँ नंबर चाहिए ना। ओके। हाँ ज्ञान तब चाहिए अगर मान लो जो यहाँ पे बैठा है उसको पता है कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, देन यू कैन एक्सप्लेन। अच्छा ओके।
ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हटा दे बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स, हाँ। बट मेक इट मोर क्रिस्प, बुलेटेड, वन लाइन बुलेट और मैक्स 1.5, जनरली आई रेकमेंड 1 में खत्म कर दो एंड कीप इट वेरी स्टैंडर्ड। ओके एंड ट्राई टू आउटपुट के नंबर्स लाओ कि बड़ी देर से काम किया तो वो लिखो, 10 मेंबर टीम है तो वो मेंशन करो, ऑल ऑफ दैट शुड बी देयर। इफ यू वांट पिंग मी ऑन लिंक्डइन, आई विल शेयर अ टेम्पलेट एज वेल विद यू, हाँ ओके। बट इसको इम्प्रूव कर ले। मेरे को कल भी रेज्यूमे में ही सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तूने सीधा बता दिया 85% तूने वहाँ मेंशन करा था ना कि विद अ डिटेक्शन रेट ऑफ 85% और उसको बोल्ड कर दिया, पहली नजर ही उस पे जाती। अच्छा समझ रहे हैं? मतलब मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो इसको कैसे क्वांटिफाई करोगे, अच्छा है कि थोड़ा अच्छा है कि ज्यादा अच्छा है, उसी का एक लाइन डाल दूंगा, मेरे 100 में से 25 बच्चे 99 प्लस परसेंटाइल थे, तो हो गया क्वांटिफाइड वो। ये चीज भी वैसे ही हो जाएगी क्वांटिफाइड, है ना? कि ठीक है हमने एक मॉडल बनाया, फाइनेंशियल मॉडलिंग को कैसे करोगे, ऐसे करोगे कि उसने कितना डिटेक्शन रेट था, है ना? तो वो नंबर डालो। और सर सर्टिफिकेशंस हटा दूँ फिर, लाइक मतलब यूज लग रहा है तो कुछ? इसको छोटा करेगा ना, तेरी स्पेस अपने आप बढ़ जाएगी। नहीं लाइक मतलब यूज लग रहा है खाली उसका? मत छोड़ो, यूज सिंगल लाइन में डिस्क्रिप्शन भी लिख दे उल टाइम का। ओके कोई नुकसान नहीं, और फ्रेशर यू नीड टू शो ऑल दिस। और एक और सा सर्टिफिकेट है, लाइक एक नेगोशिएशन बेस्ड कोर्स किया था, तो उसका डाल दूँ फिर? लाइक वो ज़्यादा मेरे को लग रहा है ग्लैमराइजेशन ना हो जाए। इतने कोई चीज ग्लैमराइजेशन नहीं होती है। फिर यहाँ पे चेस वाला चीज लिखी है यहाँ पे? नहीं लिखी। वो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसा नहीं था? यार, एक वो होता है को करिकुलर एक्टिविटीज या अचीवमेंट। अच्छा, उसका एक नया सेक्शन बना दो। व्हाट आई हियर इज गुड। it is 5 to 10%। अच्छा 5 to 10% ऑफ द टॉप पीपल, यानी 90 परसेंटाइल प्लस हो गया वो, 90 to 95 परसेंटाइल है वो। लिखना चाहिए। ओके हाँ, तो मतलब उसमें अगर लिखूंगा तो ऐसे ब्रैकेट में डाल के ये भी लिख दूँ कि टॉप 5%, टॉप 10%, 5 to 10%। टॉप 5 to 10% वैसा। तो वो सब चीज थोड़ा सा देख के जा। हालांकि वो जब तूने खुद ही बोल दिया कि मैं उसको ऐसा ले मैं नहीं खेलता, तो फिर उसको हमने डीप डाइव कोई करना ही नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि तू बोल रहा है कि मैं तो यहीं पे बैग ले तो मैं इसको और ग्रिल करूंगा ही नहीं जबरदस्ती ना। मैं ठीक है बाहर ठीक है अपने फन के लिए खेलता है, बढ़िया माइंड शार्प करने के लिए खेल रहा है। बट इवन अगर तू हॉबी के लिए भी खेल रहा है, आई कुड हैव आस्क्ड यू नेम 3 प्लेयर्स। हाँ वो मैं कर देता। आप अगर उसको कुछ पूछते कि अभी कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, वो सब मैं आंसर कर देता आपको कि अभी चैंपियन कौन है। सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं कि मैं कहूँ कि मैं स्टैंड करता हूँ और तू दूसरा का बता रहा है, तो हम लगेंगे कि इसने ये हॉबी लिखी है और ये बस एक चीज याद करके आया कि मेरे से ये पूछ लेते हैं, इसको पता है, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लिए तो पूछ लिए, है ना? बट वैसे तेरे पास चीजें हैं तो तेरे लिए इन सब चीजों पे दूसरी जगह पे ज्यादा जाना नहीं चाहिए आइडियली, बट यू हैव टू फिगर इट आउट दीस एरियाज जहाँ पे अपने ऊपर हार तो माननी नहीं है। जैसे वो मान लेंगे उस वाले नील को ले लो, तो उसमें लगेगा आई हैव दैट मैनेजरियल वर्क। बट सर फिर लाइक अगर मैं सब अगर आप कह रहे हो कि एवरीथिंग एल्स इज सेम, बस उसके पास 1 साल का जाता है, तो फिर लाइक आई स्टिल से मैं वो 1 साल जाके भी करके कोई ऐसा कुछ खास तो नहीं सीखे। हाँ मैं सीख लूंगा लेकिन सर एज फैक्टर ही हो गया ना, तो वो नहीं 1 साल बड़ा भी तो है, वो मेंशन नहीं है ना, वो हिडन है ना फैक्ट। ओके वो 1 साल उधर गया तो 1 साल लूज भी तो कर दिया उसने। आई थिंक वो मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा फ्लस्टर हो गया तभी से थोड़ा। नहीं तो कम बैक करना सीखना उसी में है ना। जब तो कैट के ऊपर भी लिख रहा था तो क्या सारे क्वेश्चन थोड़ी बन रहे थे, कुछ तो ऐसे आए थे ना तेरे से नहीं बने, सडनली तूने उसमें इम्प्रूव किया। बट तेरी नॉलेज एज अ फ्रेशर, तेरी रिसर्च अराउंड सेमीकंडक्टर अच्छा है, राइट? यू मेंशन्ड अबाउट ताइवान, यू मेंशन्ड अबाउट द टर्म्स व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तेरे को नहीं पता होगा, विद क्लीन डिस्क्रिप्शन। तो वो अच्छा लगा मुझे कि उस पर तू अच्छा बढ़ गया है। एंड मेजॉरिटी पीपल अपना अंडरग्रेड बता नहीं पाते। हाँ नहीं सब्जेक्ट मैटर वाइज यू हैड अ गुड कमांड। मैं इतना एक्सपर्टीज नहीं मेरी एरिया में, बट स्टिल जितना पता था उससे फेल्ट लाइक मतलब फ्रीक्वेंसी अगर मैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जाना चाहता था, बट कोहेरेंट वाले तूने अच्छा बता दिया तो मैं समझ गया था कि वो भी तेरे को पता होगा। वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिर मैं सोचा था बताने के लिए, बट फिर एक लेमैन के तरीके से थोड़ा बात कर रहे थे तो इसलिए भी मैंने इसको कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स देखो ऐसा पैनल्स में हो जाता है जनरली, जैसे 3-4 पैनल होते हैं, तो अगर एक पैनल की किसी चीज में एक्सपर्टीज है, जैसे लाइक यू मेंशन्ड अहमदाबाद और सर अहमदाबाद है, तो फिर वो ही जाते हैं, दूसरा बंदा जाता नहीं है, वो सुनता ऑब्जर्व करता है। फिर जैसे तूने फ्रीक्वेंसी बोला, मैं अगर मान लेता हूँ उसमें मेरे को पता है उसके बारे में, तो मैं जाऊंगा, मैं हो सकता है जैसे फ्रीक्वेंसी कर्व भी बना दूं, मैं ये भी पूछ लूँ कि रेडियो कैसे वर्क करता है, क्यों 94.3 वर्क कर रहा है, फिर सीधा उसके बाद 97 वर्क कर रहा है, बीच के जाए, ये सब चीजों पे भी फिर मैं जाऊंगा और सर नोटिस करेंगे कि कैसा रिएक्ट कर रहा है ना? तो वहाँ पे भी मतलब हो सकता है, उस पर सवाल जवाब थोड़ी हो सकता है, फॉर्मूला बना सकते हैं हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का, सब पढ़ लेना फॉर्मूला वगैरह। हाँ वो सब तो आइडिया है मेरे को, उसका तो फॉर्मूलाज तो याद है पूरे। और सर ये प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, ठीक है,
तो एक तो मेरा ये थीसिस है, और फिर आपने जैसे कहा कि ईसी के अराउंड कम प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं तो चलता है वो। You should be able to answer that ओके, set. और फिर इसमें एक और प्रोजेक्ट सर मेरा एक था कि मैंने एक ट्रेडिंग एल्गोरिथम भी बनाया था, bट आई वाज लाइक कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का भी डाला है, फिर वो भी डाल दूंगा तो शायद फाइनेंस है भी, ये खाली है। तो 5 प्रोजेक्ट डाल दूँ चलेगा? हाँ, दूसरी चीज मेरा पॉइंट ये है कि वो मैं बोलने वाला था, हाँ you are going into a general management program with a very specific requirement for yourself कि मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ही जाऊंगा without having मेरे को थोड़ा any वेग hands-on. रखना था एक्चुअली। आपने जब वो क्वेश्चन पूछा था, मेरे को अपॉर्चुनिटी लेना था कि बोलने के लिए कि नहीं मैं थोड़ा 2 साल एक्सप्लोर करूंगा। और तूने शुरू में ही बोल दिया मैं तो सेमीकंडक्टर में काम ओके, हाँ तो सारे कैसे? टॉक ही उस पर चली गई ना, ओके, अच्छा और फिर वो टॉपिक भी ऐसा था कि हम उस पर चले गए। एंड ये आंसर जनरली उन लोगों से आता है जो उस फील्ड में काम कर चुके होते हैं। अच्छा ओके You are not the right fit for Qualcomm का ही MBA रोल। You can be a good fit but not कि भाई you are the guy। ठीक है, तो एंड दूसरी चीज ये है कैंपस में 2 कंपनी आनी है, you don't have the best exposure, वो 2 कंपनी जरूरी है तुझे लेनी, कोई गारंटी नहीं है। वही हुआ था, लाइक मतलब मैं एक्चुअली कैंपस प्लेसमेंट में वही हुआ था, बट ऐसे बोल कैसे सकता हूँ उनके सामने, तो हाँ, फिर वो ठीक है, बट द पॉइंट इज यू मेड योरसेल्फ क्लियर कि मैं तो ये 2-3 कंपनी में ही जॉब लेने वाला हूँ। ओके, अपने आप को तूने नैरो डाउन कर दिया बेसिकली, अच्छा है ना। और जब तूने अपने आप को नैरो डाउन कर दिया, सो वी आल्सो हैड जस्ट वन टॉपिक टू टॉक अबाउट कि मैं तो फिर बाकी सारी चीजें देखा ही नहीं। पहले जब तू आने से पहले आई वाज मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स योर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, और मेरा पहला क्वेश्चन वही होना चाहिए था, वो होने वाला था कि कितना %, और फिर तू बोलता था रेज्यूमे मेंशन क्यों नहीं है, तो मैं वहां पकड़ना चाहता, बट वो वहीं से ही पूरा जब तक यू नो द टर्न गेम यू आर ऑलरेडी इनटू द सेमीकंडक्टर, और मुझसे बाहर आ नहीं पाएगा, वो नहीं आएंगे फिर हम वो। तो सर इंट्रोडक्शन थोड़ा स्ट्रक्चर कैसे करूँ मैं फिर, अगर ऐसा कोई पूछे तू तो? सोच कि तू क्या तू आने से पहले यहाँ पे इस पे बात करना चाहता, तू क्या चाहता तेरा इंटरव्यू किसके अराउंड में? मतलब मैं बात तो करना चाहता हूँ लाइक सेमीकंडक्टर्स के बारे में, बट लाइक ऐसा नहीं कि फिर आपने जैसे कहा ना कि नैरो डाउन हो जाता है पूरा, तो इतना भी नहीं चाहता हूँ मैं कि नैरो डाउन हो जाए उतना ज़्यादा। So create a structure जिससे ऐसा लगे कि you know you are exploring these 2-3 areas and you are interested in these 2-3 areas। ऐसा ओपनर मत दे कि ऐसा लगे कि you are only interested in this area। तो सर मैं सिर्फ ऐसा बोल दूँ कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का ग्रेड हूँ, एंड while doing my undergrad I was also interested, I was exposed to these things, उसमें मेरा इंटरेस्ट आया, and which is why I decided to be here right now, वैसे करके। देख, standard blueprint, start from where you belong from, what your family does at a very high level, or what your family like, you have a brother sister, then उसके बाद what your education has been, बहुत ज़्यादा deep dive नहीं करना, फिर जो तूने बोला exactly वही करना है, बट इससे कहीं पहले ये आ जाना चाहिए, या फिर इसके जस्ट बाद आ जाना चाहिए कि तूने 4-5 चीज़ें एक्सप्लोर कर ली because of you had exposure in your college। Now because of maybe you had a family background etc etc, you wanted to create an impact वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से you want to do an MBA, but you want to go for a general MBA to explore all the fields and those options fields can be your consulting, finance etc etc across different industries। अगर देखो फिर उसके बाद ये बोलना है तो बोल देते हैं also I would love the opportunity to explore XYZ areas, Okay। है ना, मेरा इंटरेस्ट है in particular these domains, and name 1 or 2, don't get fixated on one। domains as in like मतलब consulting, Semiconductor, अच्छा ओके, credit card for finance, basically finance। Finance, you want to them, अगर तूने वहाँ पे 2 इंटरेस्ट दे दिए तो फिर वो है कि वो दोनों बात करेंगे, बट तू भाई वो 30 सेकंड के अंदर 5 इंटरेस्ट दे देगा तो फिर वो जो उनके दिमाग में एक ही सुन पाएंगे जब वो फिर वो एक ही बात कर देगा, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा, दूसरा कहता है 2 में मुझे याद रहता है, तू मेरे को 2 नाम दे मैं याद कर लूंगा, तू मेरे को 5 देगा मुझे याद नहीं रहेगा, याद रहेगा मैं उसी के बारे में बात करूंगा। अच्छा, सो दैट इज द स्टोरी। एंड अगर मैं बीच में चेंज भी करना चाहूंगा, मैं ऐसी नजर दौड़ाऊंगा तेरे रेज्यूमे पे तो वो इतना सारा लिखा हुआ है, कुछ बोल्ड है नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या चूज करूं, यू आर गिविंग मी टू मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम ना, लेट्स स्टिक टू इट। एंड इनको भी थोड़ा धीरे बोल, ओके, जैसा सर ने कहा कि 5 में से एक ही चीज सुनी। मेक सेंस, ठीक है। तो एक इंट्रोडक्शन थोड़ा स्ट्रक्चर कर लो और रेज्यूमे ठीक कर लो अपना। ओके, इंट्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा बहुत, हाँ मतलब मैं जो सोच के आया था वो तो बोल ही नहीं पाया एक्चुअली पूरा। वो हो सकता है ना। हाँ, अब लेट्स से तूने यहाँ पे बहुत अच्छा सीवी बना लिया, कई बार लोग बोलते हैं टेल अस वन थिंग अबाउट योरसेल्फ दैट्स नॉट इन योर सीवी, नॉट इन योर सीवी। हाँ, उसका भी मैं सोच के आया था कि लाइक इसमें मैंने चेस वगैरह का नहीं लिखा था, एंड लाइक ओवरऑल इंटरेस्ट भी है जियोपॉलिटिक्स में। और तो अगर हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते तो फिर कौन सा ये जो नॉट इन योर सीवी वाला, तो चेस के बारे में तो पता ही नहीं है फिर। ओके,
क्योंकि वो पॉइंट तो दिखाना जाता है। मतलब ओके हॉबी है तो मतलब ठीक है, इट्स नॉट दैट डीप आई सपोज, मतलब दिखाना चाहिए लाइक एक्सप्लिसिटली दिखानी चाहिए। दिखानी चाहिए इन भी स्पेसिफिकली, मतलब तो उस हॉबी में है भी अगर टॉप 10% लोगों में तो दिखानी चाहिए। मतलब एनीथिंग इफ अ पर्सन इज पास 1000 ये लोग वो दिखाते तो हमारे अच्छा है ना, 1200 के पार है तो पक्का दिखाते हैं, 1400 पे अगर है तो फिर दिखाएगा। No one wants just a bookish guy. You should have hobbies. चाहे तू उसमें 95 परसेंटाइल है 85 परसेंटाइल है, हाँ कुछ तो होना चाहिए, इंटरेस्टिंग कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्योंकि जनरली व्हेन वी सी अ वेरी हाई परसेंटाइल पर्सन ना, और अगर वो 2-4 आंसर सही दे तो हम फिर वो उसको ऐसे ही ऑफ गार्ड करते हैं। अच्छा कि टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग और फन अबाउट यू, लेट्स लीव द रिज्यूमे। तो वो अपने आप वो भी क्वेश्चन हो जाता है कि आउट ऑफ रिज्यूमे अपने आप ये भी हो जाता है कि अब बोर हो गए हैं। अगर 5वां 6वां इंटरव्यू हो तो पक्का बोर हो गए हैं। और फिर सर 2 हॉबीज तो मैंने मेंशन भी नहीं की, लाइक गिटार एंड बेकिंग। फिर मेरे को लगा बट मेरे को लगा फिर वो ज़्यादा शायद हॉबीज़ का वो हो जाए तो एक आध फॉलो अप क्वेश्चन आ जाता कि स्ट्रिंग्स को लेके आया था गिटार की, वो खत्म, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ओके उतना तो पता ही होता, हाँ, कौन उतना सा सब गाना पता है। गिटार ला के तेरे को गाना बजवा दूंगा मैं। ओके मतलब मैंने लोगों के जॉब इंटरव्यूज में क्वेश्चंस देखे हैं बेकिंग के बारे में, 5 मिनट का सब्जेक्ट मैटर और उसके बाद 15 मिनट का बेकिंग के ऊपर इंटरव्यू ओके एंड गॉट द जॉब। ओके आई एम नॉट सेइंग व्हाट्स राइट और रॉन्ग, बट हाँ नहीं होता है तो उनके वैसे। इंटरेस्ट करने का कि यार ये रेडी था इस चीज के लिए भी, एंटरटेन करके भी जाएगा तो बढ़िया रहता है। ओके क्योंकि वो दे विल फाइंड आउट ये भी काफी कुछ बोलता है तेरे बारे में, तेरा स्कोर भी काफी कुछ बोलता है तेरे बारे में। ठीक है, अभी तो मैं बस ये देख रहा हूँ ये बंदा कैसा है, कितना इसमें ज़ील है, कितना डिटरमिनेशन है, he will be a good peer or not, ऐसा है। सर एक सब सॉलिड है। सर एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बाद में कभी, लाइक आप लोग फ्री हो तो पीआई का। अभी 2 दिन में मिला तो डेफिनेटली विल डू वन मोर, अदरवाइज ऑनलाइन तो डेफिनेटली चलते ही रहेंगे जब तक अच्छा हमारे ओके तो वो खत्म नहीं फिर होने वाले। दिस इज वन ऑन वन पर्सनल, जहाँ पे ऑल दिस कैमरा सेटअप इज देयर, वैसे तो चलते रहेंगे काइंड ऑफ सेशंस। अब वी हैव द एक्सपर्ट्स ऑलरेडी, वो तो बैच में ऐप पे एनरोल्ड है ना पीआई वाली जो है। हाँ आई थिंक सो। हाँ तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ये चलते रहेंगे। दिस इज अ प्रोसेस वेयर यू रिफाइन एंड यू विल नेवर गेट परफेक्ट एट दिस। स्टिल अ क्वेश्चन कैन बम्प इनटू यू जिसके बारे में तुझे आइडिया नहीं होगा, एंड स्टिल यू विल नॉट आंसर दैट एंड यू विल गेट सिलेक्टेड। हाँ मतलब एज पर दिस इंटरव्यू आई विल बी हैप्पी अबाउट सम एरियाज यू टॉक्ड अबाउट एंड आई विल बी ठीक है। तो ओवरऑल अभी जो स्कोर होता तो आप कितना देता आउट ऑफ 10? यार आउट ऑफ 10 की बात नहीं है, मैं तेरे को ठीक ठाक कर लेता सिलेक्ट। और यार देख, अदर क्राइटेरियाज डू यू हैव ना, तेरे अलावा जो मैं 10 लोग इंटरव्यू करूंगा उसके ऊपर भी तेरा स्कोर मैटर कर जाता है। अच्छा नॉर्मलाइज होता है ये? यार मतलब मैं आज 10 लोगों से मिला तो उनमें बेस्ट था, हो जाएगा ना। तेरे वाले लॉट में कितने लोग आए इस पे डिपेंड कर जाता है ना। अच्छा वैसे सब भी रहता है इसमें? ओके। और हो सकता है मेरा आज मूड खराब है, 7 नंबर 6 नंबर बट ठीक है, मतलब कि अदर थिंग्स ये इतना अच्छा है ना तो हो जाएगा वो उस चीज में। मतलब अगर ऐसा इंटरव्यू किया तो बाकी कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेशन को लेके देखते हुए हो जाएगा कन्वर्ट, क्योंकि कुछ चीजों का आंसर सही दे गया और कुछ एरिया जो मैंने तेरे को दिए जहाँ से मुझे लगता था कि फंसेगा तो वहाँ से चुपचाप कि नहीं इस पे बात नहीं करेंगे निकल आया, वो ठीक था। एंड योर सब्जेक्ट मैटर इज वेरी स्ट्रांग। जो तूने अंडरग्रेड किया है, आई एम श्योर ये सब भी तुझे पता ही होगा जो हमने नहीं पूछा। हाँ सब तो ये सही कर देगा जब रेज्यूमे में तो हो जाए, इसको तो सब भी सुधार लियो। ठीक है ओके। क्योंकि ये तो मजा नहीं आ रहा है, बोरिंग है।